Yes. Chalo. Good evening, all of you. Let us continue the next topic in this chapter. Last time हमने pseudo force के बारे में पूरा सब डिटेल इंफॉर्मेशन देखा था, राइट? और उसमें भी हमने pseudo force कभी अराइज होता है और क्यों एज्यूम करना पड़ता है, वो भी सब देखा था. We have seen the concept of inertial frame of reference as well as the non-inertial frame of reference, and we have already seen that all the Newton's laws are already can be applied in case of a inertial frame of reference. Inertial frame is the frame which is either fixed or it's moving with the constant velocity. Okay, and the non-inertial frame is the frame of reference which is moving with some acceleration. That is the non-inertial frame of reference, and the Newton's laws cannot be applied, or Newton's laws doesn't obey in the non-inertial frame of reference. But Newton's laws can be made applicable if we imagine the existence of a force which is acting on the body situated in an non-inertial frame, which is of the magnitude equal to the product of mass of the body and acceleration of the frame, and also whose direction is going to be opposite to that of the direction of acceleration of the frame of reference. Then we can just apply the Newton's laws of motion even in non-inertial frame of reference also. See, उसका एग्जांपल देना चाहता हूं. मान लो कि एक सरफेस है और एक कंटेनर है, और ये कंटेनर के अंदर मान लो कि एक पेंडुलम इस तरह से लटका हुआ है. देखो, अभी पेंडुलम जब नॉर्मली अगर लटका हुआ होता है तो वो सीधा वर्टिकल डायरेक्शन में लटकता है, बराबर. वर्टिकल डायरेक्शन में वो हमेशा सेटल होता है, ठीक है. लेकिन अगर सपोज ये जो फ्रेम है, ये जो कंटेनर है, वो कंटेनर अगर इस डायरेक्शन में ए इतने एक्सेलरेशन के साथ अगर मूव करने लग जाए, तो क्या होगा कि ये पेंडुलम जो है, इट विल नॉट बी वर्टिकल, द स्ट्रिंग विल नॉट बी वर्टिकल लाइक दिस, but in this case we can see that the pendulum will become tilted, or we can say the string attached to this pendulum will just get tilted like this. तो इस तरह से वो tilt बनेगा, और ठीक है. So whenever this body will be moving with acceleration a, suppose it is not moving with an acceleration a, in this case here, when the frame is at rest or frame is inertial, in that case the string will remain vertical, no doubt. But when the frame will start moving with an acceleration a in the forward direction, what happens is the string of this pendulum will be inclined to the vertical at some angle which is called as theta, and this angle will be decided by this acceleration actually. So abhi how will you explain why this string has get tilted, why this string has been inclined at an angle theta with the vertical? क्यों ऐसा हो रहा है, रीजन क्या है उसके पीछे? तो वो रीजन हम एक्सप्लेन कर सकते हैं अगर हम along with the gravitational force which is acting on this pendulum which is in the downward direction of magnitude mg, we can assume, we should assume another invisible force, imaginary force acting on this pendulum which is in the opposite direction to that of this acceleration. तो इस एक्सेलरेशन के अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब इस डायरेक्शन में ये फोर्स एक्ट हो रहा होगा, जिसका मैग्नीट्यूड एक्चुअली प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ दिस पेंडुलम एंड एक्सेलरेशन ऑफ द फ्रेम के बराबर होगा. एंड देन वी कैन अंडरस्टैंड अंडर द एक्शन ऑफ दीज टू फोर्सेस द रिजल्टेंट फोर्स ऑफ एक्टिंग ऑन दिस पेंडुलम विल एक्चुअली बी अलोंग दिस डायगोनल ऑब्टेन्ड बाय दिस हियर. तो इस डायगोनल के अलोंग ये फोर्स होगा, और उसी की वजह से हम ये बोल सकेंगे यहाँ पे कि द in order to be in equilibrium, इस फोर्स के चलते इसको इक्विलिब्रियम में रखने के लिए स्ट्रिंग जो है वो इस तरह से थीटा इतना एंगल कर लेता है इस वर्टिकल के साथ. सो दिस कैन बी अ बेटर एक्सप्लेनेशन ऑफ व्हाई दिस स्ट्रिंग just bends through an angle theta here in this way. Getting this? So unless and until we assume this force ma acting on this pendulum in the opposite direction to that of the acceleration of the frame, we cannot explain why this string becomes tilted. ओके, तो ये स्ट्रिंग टिल्टेड क्यों होता है, ये एक्सप्लेन करने के लिए हमको इस फोर्स का एग्जिस्टेंस मानना ही पड़ता है, ठीक है. भले वैसा कोई फोर्स है ही नहीं, बट अनलेस एंड अनटिल वी assume
the existence of this pseudo force on the pendulum here, we cannot explain why this string gets tilted at an angle theta here. Even as an another example, एक दूसरा example हम देखेंगे. Suppose there is a inclined plane like this. ये सपोज एक इंक्लाइंड प्लेन है, ओके, और यहाँ पे एक बॉल या एक स्पीयर रखा हुआ है जिसका मास m है, ओके. और अभी ये हम जानते हैं ऑलरेडी कि अगर ये रिलीज कर दिया जाए, यहाँ पे अगर छोड़ दिया जाए तो क्या होगा, तो फोर्स एक्टिंग ऑन दिस मास विल बी mg which will be in the downward direction, and thus another force will be normal reaction to the surface due to the surface of this inclined plane here, which will be at right angles to this inclined plane here, okay. But because of these two forces, we can just say that this ball will just start moving in a downward direction, okay. तो ये जो बॉल है वो नीचे की तरफ रोल होगा, ठीक है ना. It will start rolling in the downward direction in the absence of any other force, okay. But now imagine a situation, similar situation, in which the same inclined plane is suppose kept on some wheels, and suppose that this is the floor, and same ball is kept at this point here, and now this whole inclined plane is accelerated in the horizontal direction in this direction here with an acceleration a in this case. तो अगर अभी यहाँ पे इंक्लाइन जो है वो भागने लग गया, ठीक है, इसका मतलब ये बॉल जिस फ्रेम के अंदर बैठा हुआ है वो फ्रेम ही आगे बढ़ रहा है एक्सेलरेशन के साथ. तो ऐसे हालत में क्या होता है, हम ये समझ सकते हैं कि इन दिस केस दिस बॉल में become at rest. This ball come to rest and remain stationary at this point only. Okay, so why this ball remains stationary cannot be explained unless and until we assume the existence of an imaginary force, third force, which is going to be acting on this ball in the direction which is opposite to this acceleration, and which is of the magnitude equal to the product of mass of this body and acceleration of the frame. That means now in this case we have to assume there are three forces acting on this ball here. तो इस बॉल के ऊपर तीन फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं, जबकि यहाँ पे हम देख रहे हैं कि सिर्फ दो ही फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं, एक mg और एक n, और इनके चलते ये बॉल नीचे जाने वाला है बिल्कुल. लेकिन यहाँ पे हम देख सकते हैं तीन फोर्स एक्ट होंगे. अगर सपोज हम देखते हैं ठीक से, तो यहाँ पे एक आएगा mg जो कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में काम कर रहा होगा बिल्कुल. दूसरा नॉर्मल रिएक्शन ड्यू टू दिस सरफेस which will be at right angles to the surface here, and the third force acting on this pendulum here or body here will be pseudo force. Pseudo force will be acting on this ball because the frame in which this ball is located is already moving. So if we just assume the force, pseudo force acting on this ball, which is already in the backward direction, since this body is moving in the forward direction, the ball will experience a pseudo force in the backward direction, and it is of magnitude m into a here in this way. तो ये जो ma force है वो backward direction में इसके ऊपर काम करेगा, और इन तीनों forces के चलते ऐसा हो सकता है कि ये body जो है it will remain at rest. ठीक है, this body will remain at rest in this way. अगर ये तीनों फोर्सेस का अगर रिजल्टेंट जीरो बन जाता है, क्योंकि देखो इन दोनों फोर्सेस का जो रिजल्ट है अकॉर्डिंग टू द पैराग्राम लॉ, इफ यू ड्रॉ द डायगोनल ऑफ दिस पैराग्राम, देन इट मे कम आउट टू बी इन दिस डायरेक्शन हियर, which is opposite to this normal reaction n, and if its magnitude is exactly same as this n, then we can just get that this body will just remain at rest. Or in other analysis, ठीक है ना, other and alternatively, if suppose we don't find out the resultant of these two but just resolve this normal reaction in two different components, okay. अगर इस normal reaction को अगर हम दो components में resolve करते हैं तो एक component आएगा इस तरफ और एक component बनेगा इस तरफ, बोल सकते हैं ऐसा.
जिसमें से ये वाला जो कंपोनेंट है, अगर ये मान लो एंगल थीटा है, तो इसको हम बोल सकते हैं n cos theta, and this component will actually become n sin theta. Now if this theta is such that, and the value of n is such that this n sin theta is exactly equal to mg and n cos theta is equal to ma, then in that case the horizontal forces acting on the body will remain in equilibrium, or the horizontal forces will cancel each other, vertical forces also will cancel each other, and because of that the body will remain at rest at its own position only, and this happens because of the pseudo force actually. Yes, now I will just ask all of you to unmute. नहीं प्रशांत, मुझे एक्चुअली तुम्हारा क्वेश्चन समझ में नहीं आया. If you just explain it by unmuting, it will be better. देखो ठीक से, ये इसमें अगर कुछ डाउट है तो जरूर अनम्यूट करके पूछो, क्योंकि ऐसी सिचुएशंस तुम्हारे सामने कई बार आने वाली है, ठीक है, जिसके अंदर आपको सीडो फोर्स का कंसेप्ट अप्लाई करना पड़ेगा. देखो सबसे पहली ये बात समझो कि यहाँ पे जो बॉल है, तो यहाँ पे अगर हम n cos थीटा n sin थीटा को अगर रिजॉल्व करेंगे, या mg को सपोज रिजॉल्व करेंगे, तो उसका एक कंपोनेंट इस तरफ चलेगा और एक कंपोनेंट इस तरफ काम करेगा. करेक्ट है. इसको अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा जरूर, और उसके कारण इसको हम बोल सकते हैं mg cos थीटा, and this will actually be mg sin theta, no doubt. And this mg cos theta is just balanced by this normal reaction, no doubt. तो ये दोनों जो फोर्सेस है वो बैलेंस्ड है, तो इसलिए इन दोनों के डायरेक्शन में कोई मोशन होने वाला नहीं है. लेकिन mg sin theta फोर्स इज नॉट सर्टेनली नॉट बैलेंस्ड. ये mg sin theta जो फोर्स है वो बैलेंस नहीं है, तो उसकी वजह से क्या होगा कि ये जो बॉल जो है, it will be driven along the inclined plane in this way, and because of this the ball will move in the downward direction, no doubt, because this frame was at rest, frame was stationary, it was not moving. Okay, but if suppose this frame starts moving with an acceleration in the forward direction, in that case this ball will experience a pseudo force in the backward direction, and that pseudo force combined with this gravitational force will balance the normal two components of normal reaction completely. Or even we can just do one thing, suppose अगर हमको normal reaction को अगर resolve नहीं करना है, it's okay, we can just resolve this mg as well as ma into different components and just apply the condition of equilibrium, but not necessary, it will be very complicated. Instead of that, we can just understand here that the vertical component of normal reaction is getting balanced by the mg, and the horizontal component of normal reaction is getting balanced by this pseudo force, and that's why the net force acting on this body is going to be 0. And because of that, we can just get that this body is neither moving downwards nor it is moving upwards, no doubt. The body can move in the upward direction also if the pseudo force is more, and when it can be when acceleration is too much large. अगर ये acceleration बहुत ज्यादा है तो उस केस में ये हो सकता है कि ये बॉडी जो है वो ऊपर के डायरेक्शन में मूव करने लग जाए. बिल्कुल. Okay. Yes. So if you understood this, then you should be able to answer another question. Okay, suppose that there is a lift, and suppose there is a person sitting in the lift, and suppose that the mass of the person is given to be suppose 60 kilogram. Okay, and g is given already to be 9
or 9.8, or we can take it as 10 meter per second square. This is the acceleration due to gravity. We already know it. Okay. And now suppose that the lift is moving in the upward direction with an acceleration, suppose 2 meter per second square. Okay. Then now, and suppose that the person is standing on a weighing balance. So can you find out the total normal reaction experienced by the person here in the upward direction? Normal reaction कितना होगा इस person के ऊपर? Just put it in the chat box fast. What will be the total normal reaction, or we can say the total force acting on this person, including its weight, and also obviously including its pseudo force acting on it. Lift is moving in the upward direction with 2 meter per second square acceleration. Okay. And already the mass of the person is given to be 60 kilogram, and gravity जो है, acceleration due to gravity हमको already पता है, it is 10 meter per second square. Okay, so my question here is that how much net force will the person experience in the downward direction? Just put it in the chat box fast. I'm waiting. You can find out orally. 60 kilogram person is standing on in the floor of the lift, and his actual weight, if we find it out, then it will be actually yes, Prashant. देखो, the actual weight of the person will be mg, no doubt. जैसा कल ही बताया था मैंने, बराबर. Or at the same time, we can say that this pseudo force acting on the person will also be active on it in the downward direction, because the lift is accelerated in the upward direction. So ma will be the pseudo force acting on the person in the downward direction. So we can say that the total force, net force, we can say F net will actually be equal to mg plus ma, where m is 60. So 60 into 10 plus 60 into 2, which comes out to be, if we take 60 common, then we can get this 60 multiplied by 12, which happens to be 720 Newton. Okay. Otherwise, if the lift is at rest, then what will be the net force or weight of the person acting on it here? So person का जो weight है actually वो कितना रहने वाला है? mg के बराबर, where m is going to be 60 and g is going to be 10. That means it will be 600 Newton only. So the actual weight of the person is going to be 600 Newton. Okay, but that is going to be in stationary lift. But if the lift starts ascending up into with the acceleration of 2 meter per second square, then that 2 meter per second square will get added to this 10 meter per second square, so as to become 12 meter per second square. And that 12 meter per second square will be the effective gravity in the lift, so far as the lift is moving upwards in the with the acceleration of 2 meter per second square. And in that case, the person will experience a net force of 720 Newton, which is slightly greater than this 600 Newton. And that force has to be balanced by the normal reaction acting on the person due to the surface, which will be the 720 Newton only, which is greater than his own weight, like this. And that's why the person just experiences a slight weight gain in this case when the lift starts moving upwards. Okay, if my question is that the lift is suppose moving in the downward direction with the same acceleration, that is 2 meter per second square, in that case, can you tell me what should be the answer? If the lift is moving downwards with an acceleration of 2 meter per second square, in that case, what will happen to the total net force acting on the person? Yes, very good, 480 Newton. देखो, क्योंकि उस केस में क्या होगा, the direction of the pseudo force will just get changed and it will be upwards this time, but the magnitude will be the same only, that is ma. So that we can just get the net force in this case here will actually be mg minus ma, so that this m is taken common and g minus a will be left inside, so that this m, which is 60, will be multiplied with 10 minus 2, which happens to be 60 into 8, which is nothing but 480 Newton, which is slightly less than this 600 Newton even. So in this way, we can just say that this person will experience a weight loss in this case whenever the lift is moving in the upward direction in this way.
तो ओके, अभी एक बहुत इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन मैं अभी पूछ रहा हूं. Focus on this question now. See, if suppose this lift starts moving in the downward direction with an acceleration of 12 meter per second square, what will happen? Can you tell me? Just I'll stand here. Yes, the question here is that the lift now is starts moving in the downward direction with an acceleration of 12 meter per second square. What will happen in this case now? Just put it in the chat box fast. Very good. Parth is saying that he will start flying in the upward direction. उससे आगे, उससे भी आगे जाके, again my question is, with what acceleration? With what acceleration he will fly in the upward direction? Just put it in the chat box. What will be its acceleration of flying? Very good. 2 meter per second square. Because already gravity is 10 meter per second square, which is acting in a downward direction, right? And due to this acceleration of the frame, which is 12 meter per second square, the person will experience a pseudo force in the upward direction, which is of magnitude m into a. So in this case, we can just say that the net force acting on the person will actually be, तो देखो अभी ठीक से, the net force acting on the person will be actually आप यहाँ पे ma ज्यादा है ना, ma is greater than mg, so we can just get that the net force will be ma minus mg in this case, and which will be, if we take this m common, then we can get a minus g left inside the bracket, and here m is going to be 60 and multiplied with this 12 minus 10, which happens to be 2, so that we can get that 60 multiplied by 2 meter per second square, which comes out to be 120 Newton. So 120 Newton of force will be acting on the person, and that is also in upward direction. That means the person will move upwards with the speed of, with the acceleration of 2 meter per second square. But do you think it will happen on really? क्या ऐसा सचमुच होगा? बिल्कुल होगा. Why no? Why not? See, तुमको एक एग्जांपल दिखाता हूं. अगर मान लो ये पेन है, मेरे हाथ में पेन सभी को दिख रहा है, ठीक है. अभी इस पेन के लिए ये हाथ जो है वही एक तरह से फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, इतना तो समझ सकते हो आराम से, नो डाउट. अभी सपोज ये हाथ को अगर मैं एक्सेलरेट करता हूँ नीचे की तरफ, तो उसकी वजह से ये पेन जो है तो वो भी नीचे की तरफ जाएगा उसके साथ, नो डाउट. बट अगर मेरा हाथ का जो एक्सेलरेशन है, तो वो अगर सपोज जस्ट लाइक यहाँ पे जो था, पहले जो था सिचुएशन में, जो 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर अगर है, तो वो पेन हाथ के साथ चिपक के रहेगा, लेकिन वो पेन जो है वो थोड़ा सा वेट लॉस करेगा, नो डाउट. लेकिन अगर मैं ये हाथ को अगर ऊपर की तरफ मूव करता हूँ, ठीक है, ऊपर की तरफ, तो उस केस में क्या होगा, ये पेन का जो वेट है वो थोड़ा मुझे ज्यादा एक्सपीरियंस होगा, because normal reaction will be more in this case, because the hand is moving in the upward direction with some acceleration, no doubt. But now just think, if I just ये hand जो है वो अगर नीचे की तरफ, और वो भी ऐसे एक्सेलरेशन के साथ मूव कर रहा है जो कि 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मतलब ग्रेविटी से भी ज्यादा है, तो उस केस में इस हाथ के फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अंदर इस पेन का मोशन कैसा होगा, देख सकते हो ठीक से. देखो ठीक से कि ये यहां से मैं स्टार्ट कर रहा हूं अभी, और अभी हाथ जो है वो नीचे जाने वाला है. जस्ट ऑब्जर्व केयरफुली, ओके. अभी मे भी तुमको ये लैगिंग की वजह से थोड़ा नहीं दिख रहा होगा, बट जस्ट ऑब्जर्व केयरफुली दैट व्हेन आई जस्ट टेक माय हैंड डाउनवर्ड्स, द पेन जस्ट remains upwards on account of its own inertia. But if we see from the frame of reference of this other hand here, then we can just observe that the pen is moving in the upward direction. Actually, the pen is moving slowly with an acceleration due to gravity in the downward direction, and hand is moving with a greater acceleration. Okay. But in the frame of reference of the hand itself, ठीक है, तो hand के frame of reference में अगर देखेंगे तो motion of pen will be upwards.
actually motion of pen is downwards, but hand is moving faster, or we can say hand is accelerating faster than the pen, and that's why in the reference of the hand here, the pen will be appear to be moving in the upward direction. So the same thing happens here also. So if lift starts moving in the downward direction with the acceleration which is greater than the acceleration due to gravity, then in that case, in the acceleration of the frame, in the frame of reference of the lift, the person will appear to be moving upwards, and a time will reach when this person will just hit the roof in the worst case. Okay, right? This person will just hit the roof, ये उसके छप्पर को वो टकराएगा जरूर, क्योंकि lift is moving downwards with an acceleration which is greater than the acceleration due to gravity, and person is falling down with an acceleration due to gravity itself, only 10 meter per second square, and that's why in the frame of reference of the lift, the person will be moving in the upward direction. Okay. But actually we don't allow the lift to move with an acceleration which is greater than 12 meter per second square for the security reasons. Okay, ऐसा नहीं है कि हम नहीं कर सकते. We can just construct a lift which will move in the downward direction with an acceleration which is greater than 12 meter per second square. हम रॉकेट तैयार करते हैं, वही रॉकेट जो ऊपर के डायरेक्शन में जाने वाला है, उसी रॉकेट को अगर हम डाउनवर्ड डायरेक्शन में अगर उसका स्पीड दे देते हैं, या उसका एक्सेलरेशन अगर ग्रेविटी से ज्यादा अगर कर देते हैं, तो इन दैट केस वी कैन जस्ट कंस्ट्रक्ट द डिवाइस in which will be moving in the downward direction with an acceleration of which is greater than gravity. No doubt we can construct, but we don't construct it just for security reasons. ठीक है ना, सिक्योरिटी के लिए, सिक्योरिटी रीजंस से हम ये तैयार नहीं करते ऐसे लिफ्ट्स वगैरह ऐसे कोई. ठीक है, बट दैट कैन बी पॉसिबल. ठीक है, इट इज पॉसिबल. तो याद रखो एक से, these are all the examples of pseudo force. Remember. Now we'll just go to the next topic. Yes, there is another category of the forces which is called as a contact force and non-contact force. See here, contact force and non-contact force. As its name suggests, बिल्कुल उसका मीनिंग क्लियर है, नाम से ही क्लियर है कि कॉन्टैक्ट फोर्स का मतलब क्या होता है. द फोर्सेस which need which are required that the bodies should contact each other, then only the force will acting on between them, then that those forces are called as contact force. Okay, but there are some forces which are exerted without any physical contact. They are called as non-contact forces. Remember the examples. देखो अब यहाँ पे सबसे पहले इसमें आएगा किक, जो हम देखते हैं. किक जो हम करते हैं, अगर सपोज किसी बॉडी को हम किक कर रहे हैं, तो दैट इज अ कॉन्टैक्ट फोर्स ऑब्वियसली. इवन पुश या पुल जब करते हैं, कोई सपोज सम हॉर्स इज सपोज इट इज ड्राइविंग द कार्ट, then that is he is pulling, the horse is pulling the cart, then that is the contact force. The horse is applying the contact force on the cart, no doubt. Even bullock cart भी जब हम देखते हैं, तो bullock cart जब bullock खींचता है उसको, तो उसकी वजह से वो भी जो एक तरह से पुल है, और that is also the contact force. उसके लिए रस्सी बीच में जरूरी होता है, तो रस्सी यूज करके ही वो आगे बढ़ सकता है. अगर रस्सी नहीं है तो the force cannot act. In that case, that is called as the contact force. We can understand here. But there are some forces which are non-contact forces. That is gravitational force. We can see gravitational force is a non-contact force. Why? Because अभी देखो मून जो है, मून अर्थ के आसपास घूमता रहता है, कोई रस्सी बंधा हुआ नहीं है बीच में, है कि नहीं, फिर भी वो घूमता रहता है. And that is because of the gravitational force, which is a non-contact force actually. Because without any physical contact, the moon can experience the force exerted by Earth. Even all the planets can experience the force due to the sun, and they can revolve around the sun in a circular orbits due to the gravitational force. And that gravitational force is actually the non-contact force. We can see, no doubt. Even electrostatic force जो है, electrostatic force is also the non-contact force. Magnetic force
which is a part of electromagnetic force only, that is also a non contact force we can say. क्योंकि जो दो मैग्नेट्स होते हैं, मान लो दो मैग्नेट्स को अगर हम सामने लेके आते हैं, तो उनके नॉर्थ पोल्स अगर इस तरह से सामने लाते हैं, तो नॉर्थ पोल को टच करने की भी जरूरत नहीं है। नॉर्थ पोल जब नजदीक आते हैं तभी वो रिपेल करना चालू करते हैं कि नहीं। तो इसलिए हम देख सकते हैं कि जैसे ही वो रिपेल करना चालू करते हैं, तो बिना फिजिकल कॉन्टैक्ट किए वो रिपेल करना चालू करते हैं। दैट मीन्स दैट इज अ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स वी कैन से। मैग्नेटिक फोर्स इज अ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। अगेन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज ऑल्सो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। दो चार्जेस अगर दूर दूर रखे हुए हैं, तभी भी एक चार्ज के द्वारा बना हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड दूसरे चार्ज की तरफ पहुंचता है, और वो इलेक्ट्रिक फील्ड उस दूसरे चार्ज के ऊपर फोर्स एक्सर्ट करता है। दैट्स व्हाई वी कैन जस्ट से दैट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज अ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, बट फ्रिक्शनल फोर्स is not a non-contact force, is going to be a contact force. Remember, frictional force. Okay, frictional force or friction itself, which is a force, is going to be a contact force only. क्योंकि frictional force cannot act unless and until there is a contact between the two bodies. अगर contact ही नहीं है तो friction कहाँ से आएगा, है कि नहीं। तो friction आने के लिए contact जरूरी है, तो इसलिए उसको हम क्या बोलेंगे, contact force बोलेंगे। और इवन सपोज कोलिजन, दो बॉडीज के बीच में जो कोलिजन हुआ करता है, कोलिजन, दैट इज आल्सो व्हेन अ कोलिजन टेक्स प्लेस, one body exerts a force on another body, and another body also that exerts the same force on the first body, and these two forces are also the contact forces. Remember, these are the examples of contact forces. Even viscous force. अभी viscous force क्या होता है पता है तुमको? What is viscous force? देखो, अगर सपोज किसी लिक्विड के अंदर अगर हमने कोई बॉल या कोई भी सॉलिड ऑब्जेक्ट अगर डाल दिया, ये बॉल सपोज मैंने लिक्विड के अंदर डाल दिया, तो द मोशन ऑफ दिस बॉल इन द लिक्विड इज अपोज्ड बाय द लिक्विड इटसेल्फ। दैट इज एक्चुअली द विस्कस फोर्स। विस्कस फोर्स की वजह से ही ये बॉल का जो मोशन है वो अपोज किया जाता है। तो दैट इज द कॉन्टैक्ट फोर्स एक्चुअली। अगेन बिकॉज ये लिक्विड के अंदर अगर जाएगा ही नहीं, तो फिर वो विस्कस फोर्स काम नहीं करेगा। विस्कस फोर्स काम करने के लिए इस लिक्विड के कांटेक्ट में तो आना पड़ेगा कि नहीं। जैसे हम स्विमिंग करते हैं तो हमको हाथ हिलाने पड़ते हैं, व्हेन वी आर जस्ट पुशिंग द वाटर इन बैकवर्ड डायरेक्शन। तो उस केस में क्या होता है कि अगर सपोज हमको हाथ हिलाने हैं, एयर में अगर हमको हाथ हिलाने हैं तो इट बिकम्स वेरी इजी, बट अगर सपोज हम वही पानी के अंदर अगर हम हाथ हिला रहे हैं तो it becomes somewhat difficult, because water opposes the motion of hand inside it, and that's why yes viscous force is going to be the frictional force between the layers of fluid or liquid. So in that case we can just get that this viscous force is also a special type of contact force, and these forces are going to be non-contact forces, remember. So all this is all about the contact force and non-contact force. Now we'll just talk about the conservative and non-conservative forces. See here, what is the difference between conservative and non-conservative forces? Okay, forces का ये अलग कैटेगरी है, ठीक है ना, अलग क्लासिफिकेशन है, that is conservative and non-conservative. Just understand the meaning of both of these terms. See here, conservative का मतलब होता है अगर सपोज कोई फोर्स है और उस फोर्स के अंदर अगर हमने किसी बॉडी को मूव किया, ठीक है, तो वो उसकी वजह से जो वर्क डन हो जाता है, that work done will get just stored, and the body will do the same amount of work to come back to the same point once again. For example, if you just consider the gravitational force, तो ग्रेविटेशनल फोर्स के अंदर देखो क्या होता है। समझो ये अर्थ और ये सपोज एक बॉडी जिसको हमने यहाँ से लिफ्ट किया, तो जैसे हम उसको ऊपर की तरफ लिफ्ट करेंगे तो उसकी वजह से जो उसके ऊपर जो ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट हो रहा है, तो उसके अगेंस्ट हम उसके ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं और उसकी वजह से उसके ऊपर वर्क डन किया जा रहा है, ठीक है, बाय एक्सटर्नल फोर्स। एंड सपोज द बॉडी जस्ट लिफ्ट्स अप हियर एट दिस पॉइंट हियर, नो डाउट। So far as the body is moving in the upward direction, the its work done on the body will just get stored in the body in the form of potential energy. Okay, when the body reaches at the height h above the surface here, the body will have some potential energy stored in it, and now
if suppose the body is released at this point, अगर यहाँ से हमने उसको छोड़ दिया तो क्या होगा? The body will just start moving on its own in the downward direction and just acquire the same amount of kinetic energy when it will come back to the same point again here. That means in this case, in this second case here, the body itself is doing some work and gaining the kinetic energy so far as and it will automatically come on the same point as it was started before. करेक्ट है? तो यहां से ऊपर लेके जाने के लिए हमको वर्क डन करना पड़ा. करेक्ट है? हमको उसको लेके जाना पड़ा, बिल्कुल. बट हम जब उसके ऊपर वर्क डन करते हैं तो वो वर्क डन वेस्ट नहीं हुआ, उसके अंदर जमा हो गया, उसके अंदर जमा हो गया. और जैसे हमने उसको छोड़ दिया तो उसकी वजह से वो बॉडी जो है वो नीचे आके उतना ही वर्क डन वो बॉडी खुद अभी कर रहा है और यहाँ पे फिर से उसी पॉइंट पे वापस आ जाता है जहां से वो स्टार्ट किया था. ठीक है? तो in the first case, from when the body is taken from the point A to the point B, the work is done on the body. Okay, and that work done gets stored in the body in the form of some potential energy, and then when the body is just released at that point, the body does some work. Same amount of work is done by the body. In this case, पहले क्या हुआ? The work is done on the body, and in the second case, the work is done by the body, and hence the body just gains the equal amount of kinetic energy and comes back to the same point once again where it was started with. Okay, तो फर्स्ट केस में हमने वर्क डन किया और सेकंड केस में बॉडी ने खुद ने वर्क डन किया. ये होता है, इसको बोलते हैं कंजर्वेटिव फोर्स. ओके, बट in case of some forces this doesn't happen. See, suppose we have a table. Okay, this is a table. Okay, and suppose that object or any block is kept on the surface of the table at point A here. Okay, and suppose that by applying some force, the body this body is just moved along the some path and taken to the point B here at some distance. Okay, now we know that some force has to be applied on the body and some displacement takes place here, and we have to do some work against the friction force here. तो इस फ्रिक्शनल फोर्स के अगेंस्ट हमको कुछ ना कुछ वर्क डन करना पड़ता है. बिल्कुल, हमने वो वर्क डन कर दिया. ठीक है, लेकिन अभी देखो, जब ये बॉडी बी पे जाएगा, क्या ये बॉडी बी से ए की तरफ अपने आप आ जाएगा? बिल्कुल नहीं. क्यों आएगा ये बॉडी? यहां से ए से हमने बी की तरफ उसको लेके गए, अभी बी से ए पे लाने के लिए हमको ही फिर से वर्क डन करना पड़ेगा. द बॉडी इज नॉट गोइंग टू डू एनी वर्क व्हाइल कमिंग फ्रॉम बी टू ए बैक, but we will have to do again the work in order to bring this body back from B to the point A here. And that's why this type of force is called as non-conservative force, in which whatever work is done on the body doesn't get stored in the form of potential energy. Okay, potential energy का कोई संबंध ही नहीं रहता इसके अंदर. potential energy के अंदर वो कोई वर्क डन यहाँ पे जमा नहीं होने वाला है. no work is going to get stored. okay, stored कुछ भी नहीं होने वाला है. जो वर्क डन किया वो गया. ठीक है, वो उसको हम कुछ भी कभी भी वापस नहीं रिकवर कर सकते हैं. द बॉडी विल नेवर कम बैक टू द सेम पॉइंट ऑटोमेटिकली ऑन इट्स ओन. बिल्कुल नहीं. वी विल हैव टू ब्रिंग इट बैक एंड वी विल हैव टू डू सम अनदर वर्क in order to bring it back from this point to this point here. And this type of force is actually called as non-conservative force, because the whatever work is done in this case is not conserved. कंजर्व नहीं होता है, कंजर्वेशन का कोई संबंध नहीं होता यहाँ पे. लेकिन हाँ, यहाँ पे कंजर्वेशन होता है. whatever work is done on the body, just body will just keep it stored. The body will just store that work done in its own system, and then the body will use that work done to come back to the same point again on its own. The body will come back on its own when the body is set free, and this type of force is called as conservative force. Remember, but when work is done on the body and the that work done is not conserved at all, is not stored in the form of any potential energy,
but we will have to do the work again by on bringing the body back from the point B to the point A back here. So in that case, the force is called as non-conservative force. So we can just give the example of non-conservative force, that is the frictional force. देखो यहाँ पे frictional force is a special kind of non-conservative force. Why? Because the work done against frictional force never gets conserved. Okay, never gets conserved. But work done against gravitational force always gets conserved, and it is getting stored. And that's why the same amount of work is done by the body while coming back to the same point again. And that's why this type of force is called as conservative. But this type of force in which work done is lost every time, it is called as a non-conservative one. What is another example of conservative force? You can say, anybody? कंजर्वेटिव फोर्स का कोई और एग्जांपल दे सकते हो? See here, if plane is inclined, then in that case the work or two type of work will be done. देखो ठीक से, अगर एक inclined plane है ऐसे, और इस बॉडी को अगर हम सपोज यहां से अगर यहाँ पे लेके जाते हैं, अभी इसमें दो ऑप्शंस है हमारे पास. एक ऑप्शन ये है कि स्मूथ प्लेन. ओके, स्मूथ प्लेन. स्मूथ मतलब frictionless. If it is a frictionless plane, then in that case the work done will be against gravitational force only, and that will be conservative, no doubt. But if the plane is not smooth one, but it is a rough one, अगर rough plane है तो उस केस में क्या होगा कि when the body is brought from this point to this point, right, from the point A to the point B here, then in that case the work needed to be done by against the gravitational force also and against the frictional force as well. Okay, तो हमको यहाँ पे दो फोर्स के अगेंस्ट वर्क डन करना होगा. एक तो ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट हमको वर्क डन करना पड़ेगा, और दूसरी तरफ फ्रिक्शनल फोर्स के अगेंस्ट भी वर्क डन करना पड़ेगा, राइट. और अभी यहाँ पे इस रफ प्लेन के अंदर जो ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट हमने जो वर्क डन किया, वो वर्क डन कंजर्वेटिव हो गया, क्योंकि हमको पता है ग्रेविटेशनल फोर्स इज अ कंजर्वेटिव टाइप ऑफ फोर्स, राइट. And that's why work done against the gravitational force will just get stored in the form of potential energy always. कुछ भी हो जाए, the work done against gravitational force will always be get stored in the form of potential energy, no doubt. But whatever work is done against this frictional force here of this inclined plane, rough inclined plane है ना ये, तो whatever work is done against the frictional force is not going to get stored in any form of energy, but it is getting lost. It can never be conserved, it cannot never be returned back. तो वो जो वर्क डन हमने किया फ्रिक्शनल फोर्स के अगेंस्ट, वो गया, वो किधर स्टोर नहीं होने वाला है, वो गया मतलब गया. ठीक है, अभी इस हाँ, अगर सपोज यहाँ पे इस बॉडी को अगर हम रिलीज कर देते हैं, यहाँ से अगर हम उसको छोड़ देते हैं, एंड तो इन दैट केस द बॉडी विल कम बैक टू द सेम पॉइंट वंस अगेन, जस्ट बाय ऑन अकाउंट ऑफ इट्स पोटेंशियल एनर्जी व्हिच इज स्टोर्ड इन इट हियर. ओके, तो जो पोटेंशियल एनर्जी उसका था, तो वो एनर्जी यूज करके ही वो नीचे आएगा. उसके अंदर भी इस बॉडी को इस फ्रिक्शनल फोर्स के अगेंस्ट वापस वर्क डन करना पड़ेगा, और उसकी वजह से उस फ्रिक्शनल फोर्स के अगेंस्ट जो भी वर्क डन वो करेगा, उसकी वजह से उसका कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी कम होता जाएगा, और उसकी वजह से उसका जो जितना पोटेंशियल एनर्जी वो काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे गेन करना चाहिए था, अगर ये सरफेस स्मूथ होता, उतना काइनेटिक एनर्जी नहीं गेन कर पाएगा, राइट. तो इसलिए ये जो बॉडी है, इट विल जस्ट gain lesser amount of kinetic energy, which is going to be equal to the potential energy at this point here minus work done against this frictional force while coming from this point to this point here. So in this case also we can see that whatever work is done against the frictional force is not going to be conservative, but the work done against the gravitational force is again going to be conservative. ठीक है, तो प्लेन चाहे इंक्लाइंड हो या कैसा भी हो, प्लेन हो, हॉरिजॉन्टल हो या वर्टिकल हो, डजंट मैटर. व्हाटएवर वर्क इज डन अगेंस्ट ग्रेविटेशनल फोर्स, फोर्स की हम बात कर रहे हैं, प्लेन की बात नहीं कर रहे हैं. ठीक है, तो फोर्सेस जो है वो फ्रिक्शनल फोर्स के अगेंस्ट जो वर्क डन हो जाता है वो नॉन कंजर्वेटिव ही होता है, और ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट जो वर्क डन किया जाता है वो कंजर्वेटिव ही होता है. बात है समझ में ठीक से? यस. कैन एनीबॉडी टेल मी अनदर एग्जांपल ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स other than gravitational force? Yes.
See here, electrostatic force is another example of conservative force. Why? Because see here, in the same way as in case of the gravitational force, if suppose we have a plate, this is suppose plate, and this is suppose another plate, and suppose this plate is charged with a positive charge, and this plate is connected to negative charge. Okay, and there is some electric field between the in the space between these two plates. Okay, ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो पॉजिटिव से नेगेटिव होता है हमेशा, हम जानते हैं ऑलरेडी. ठीक है, सो ई इतना इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे है, नो डाउट. नाउ इफ वी सपोज टेक अ चार्ज, ओके, एक चार्ज हमने लिया और इस चार्ज को अगर पॉजिटिव चार्ज है सपोज, ठीक है, सो पॉजिटिव चार्ज को अगर हम इधर से ये नेगेटिव वाले प्लेट से अगर पॉजिटिव वाले प्लेट की तरफ अगर लेके आते हैं, यहाँ पे अगर हम इस नेगेटिव चार्ज को लेके आते हैं, ये चलो पॉजिटिव चार्ज है, और इस पॉजिटिव चार्ज को अगर हम यहाँ से इधर ए पॉइंट से बी पॉइंट तक लेके आते हैं, तो उस केस में क्या होगा? We will have to do some work because we are moving against the electric field, right? So we will have to do some work, but whatever work is done on this charge here will get stored in this charge as a potential energy, and whenever this charge is released at this point, it will just move on its own and come back to this point A here. Okay, and that's why we can just say that his electrostatic force is nothing but a conservative one, conservative force, no doubt. But on the other hand, if we see here the viscous force, again viscous force is going to be a non-conservative force once again. Why? Because if suppose there is a water container, suppose एक वाटर का कंटेनर है, इमेजिन करो, और इस वाटर के कंटेनर में मान लो कि एक ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है सपोज, ठीक है, इस ऑब्जेक्ट को अगर मैं यहां से ए पॉइंट से बी पॉइंट तक अगर लेके जाता हूं तो क्या होगा? मुझे वर्क डन करना पड़ेगा, बिल्कुल. आई विल हैव टू डू सम वर्क टू अपोज दिस विस्कस फोर्स, बिकॉज जब ये मैं यहाँ से उसको यहाँ पे लेके जाऊंगा तो ये वाटर उसको अपोज करेगा कि नहीं? जरूर. तो वो वाटर के अपोजिशन को ओवरकम करके मुझे यहाँ पे उसको लेके जाना पड़ेगा, बिल्कुल. लेकिन अभी यहाँ पे जाने के बाद अगर मैं बॉडी को छोड़ देता हूं तो वो बॉडी यहाँ पे वापस नहीं आने वाला है. ओके, दिस बॉडी इज नेवर गोइंग टू रिटर्न बैक टू द पॉइंट ए हियर on its own, but that's why we can say that the work done against this viscous force here is also an example of non-conservative force. Getting it here? Non-conservative force in which the energy is never conserved, energy is never stored. ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी का कोई कंसेप्ट होता ही नहीं है उसके अंदर, बिल्कुल नहीं. ठीक है, वट एवर वर्क इज डन अगेंस्ट दैट फोर्स जस्ट गेट्स लॉस्ट, इट गेट्स वेस्टेड, एंड दैट्स व्हाई इट इज नेवर रिकवर्ड. Okay, so body will never come back to the same point and do the work on its own, and that's why it's called as non-conservative force. Whereas in case of the conservative one, the body, whatever work is done on the body just gets stored in the form of potential energy, and whenever the body is set free, it just comes back to the same point once again and just does the same amount of work and comes back to the same point and loses all its energy while coming back. That happens in this case here. So electrostatic force, gravitational force, magnetic force, all these are the conservative forces here. Frictional force, viscous force on the other hand are going to be non-conservative forces here in this case, right? Okay, chalo, I hope all of you understood all these things. So let us stop this lecture here. Thank you all of you.